as you move and within the oceans, so deep in the oceans, what kind of topography and relief feature is present? We have to find out. And there are various techniques through which we can understand these things. Okay, and we had the ideas. So the oceanographers gives us idea about the bottoms of the sea based on various technology. The prominent one is the sonar, sound resonance and uh, ranging techniques. What I have said, navigation and ranging technique, that is known as sonar. So based that technique is based on the sound waves propagation. Okay, as you know that sound is a longitudinal waves and needs medium to propagate. Sounds cannot move in the uh, what sound cannot move in vacuum like the light. Light may travel in the vacuum because light is a transverse wave. So properties of the sound wave. So the sound wave properties. So the water is a liquid medium. The sound can travel in the liquid solid mediums easily, and as well as sound also moves in the medium of air. So the scientists use the sound waves and they measures the time lapse and the distances, and according to which they gives us idea about the bottom topography. One technique what I have discussed, the bathymetry technique. In the bathymetry technique, what we learn what is we measure the ocean depth basically, as well as the different topographical structure and the shape of the what the ocean basins. So in the bathymetry techniques, what we measure the depth of the ocean, as well as we understand the shape of the ocean basins, as well as we also uh, observe the ideas of the topographical feature. So I had discussed the bathymetric techniques in which we use the sonar techniques. Now at present, we also use the space technology. We use the satellite systems to understand the ocean bottom topography, what I had discussed in my previous lecture. So when you look at the distribution of the sea in the northern hemisphere, when you compare, the land is vast. So the sea, when you look at, occupied 61% of the area. Excuse me. And in the southern hemisphere, where the sea is the vast, occupy 81% of the area. Okay. So basically, when you look at the globe, the in the southern hemisphere, the water body is huge and large. Okay. So occupies 81% part of the earth, what I had discussed. And four major oceans we know, all know. But apart from that, other reservoirs, other part of the hydrospheres are the landlocked sea, enclosed sea, the fringing seas, the intercontinental sea. Okay, apart from these oceans, there are different seas or the reservoir of the marine water. Okay, and as I have said, freshwater bodies are also present. But in oceanography, we learn the marine water bodies or the saline water body or the huge body which occupies the Earth's surface. Now, uh, there is another uh, important point I had discussed in my previous lecture is hypsometric or hypsographic curve. What this curves gives us idea? This curves gives us idea about what the elevation of the Earth's surface means over the land. What is the elevations in comparison to the depth of the sea? What I had discussed, that average depth of the ocean is 3800 meter in comparison to the average elevation over the land is 840 meter. Okay, because I had given you the ideas, the highest point on the planet Earth over the land is the Mount Everest and height is 8850 or 8848 meter. But when you look at the deepest part of the ocean is the Mariana Trench and Challenger Deep, and it is almost 11 kilometer deep. So when you compare the average, so how we can measure this? Again, the depth is measured with the help of sonar technology and satellites data. So bathymetry I had discussed already. I had given you the idea how through the sonar techniques we find out the different topographical features like continental shelf or slope or
rise and abyssal plain. How we get the ideas of this I had discussed. And I had also discussed, okay, what the hypsometric, this is the satellite picture. So with the help of satellite, we can also understand the distributions of the bottom topography, the shelf region, the slope region, the rise region, the abyssal plain, and different species which is present, as well as salinity of the sea through the scanners and the camera which is mounted with the satellites. Okay, that gives the informations. Now, through the hypsometric and hypsographic curves, what it represents, the average elevations over the land in comparison to the depth of the sea, and I had discussed as well as this graph also gives us idea about the distribution. Say here over the land, what I have seen. When you move and compare with the altitude, what I have seen, the 1 kilometer altitude, when you look at it, occupies almost 20% or 21% part of the land. Like that, when you look at went into the depth of 4 to 5 kilometer within the sea, that regions occupied almost 24% part. So what I have said, that oceans occupied 70.8% part, as well as the land 29.2% part. So this hypsometric and hypsographic curve is again important for your as a short notes in your GS paper as well as your optional. So now when you look at general profile, general bottom profile, so what are the general bottom profile? In every oceans, what you find in the bottom, certain relief features, that is continental shelf, slope, rise, okay, trenches, abyssal plain, all these features you find. Apart from that, other topographical feature you find in oceans are the ridges, the seamount, the guyots, okay, the deeps, all these are the features, the bank, the shoals, okay, all these kind of topographical feature we observe. Now, I had discussed about the continental shelf. So let's recollect some idea about the continental shelf. What I have said, that when you move, there are various uh, concepts or theories regarding the origin of the continental shelf. Because in oceanographer or scientists, there is no unanimity over the origin. There are various concepts. तो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सारे आइडियाज हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे बना, उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा, थोड़ा ब्रीफ आइडिया आई विल गिव यू. Okay, but let's first understand the salient feature of continental shelf. What I have said, that it is the extension of the continental part which is submerged by the water. So why the submergence? Because of change in sea level, or sometimes there are various theories, as I've said. A few people stated that the continental region is eroded by the waves, okay, and the currents of the sea, and the platform like features is formed, which is covered by the deposit which is carried by the rivers, and the continental shelf forms. Okay, so there are different theories. So what I have written here, that extension of continent as we move out from the edge of the land into the water is known as continental shelf. So it is the extension of the land towards the sea, which is submerged by the water, is known as continental shelf. Then the very important feature is gradient, but this gradient may vary from sea to sea. So when you look at in general, the gradient is 1 to 2 degree. Okay. So the gradient is very gentle, and the water is shallow. It is the shallow part of the ocean, continental shelf. But very, very important and significant economically. Why? I will tell you. And that's why what I have said, the broad shallow water zone it is. And when you look at the seaward limit, when you move from the coastal region towards the sea, till what depth you find the continental shelf in general? 100 fathom or 600 feet. So what I have mentioned, that seaward limit is 100 fathom. But it may vary in Pacific
or in Atlantic or in Indian Oceans, it may vary. The gradient also may vary from sea to sea, from ocean to ocean. Getting my point? But in general, I am talking about in general. ठीक है, मैं जनरल प्रोफाइल के बारे में बात कर रहा हूँ. Continental shelf occupies 7.5% part of the oceanic surface. So, out of entire continental shelf slope, rise, abyssal plain, out of all these, the shelf region occupied 7.5% of the entire ocean bottom topography. And what I have said that in the shallow sea, the light is penetrated, so there is a algal bloom. The phytoplanktons are present. Phytoplanktons are the producer in the marine ecosystem. Further, when you learn the ecosystem concept, what you find that in any ecosystem, when you move to the forest, or when you move to the cropland, or when you move to the grassland, or when you move to the pond, that is a freshwater system, or when you move to the streams or waterfall, or when you move to the ocean or the sea, all these are ecosystem. Okay. In ecosystem, there are two kind of factors are present: abiotic and biotic, non-living and living. Water is a non-living factor, but the fishes, those who are living, are the biotic factor. Okay, there are various insects, those who are living in the water. Their larvae, they reproduce there. Okay, they lay eggs. So there are various species. Some species are very small, some are larger, some microbes are also there in the water bodies. Okay, certain bacteria. Protozoans, the single-celled animals, are also living. And multicellular organisms like whales and fishes are also living. Turtle, snakes, no. So when you look at, this is the marine ecosystem. In the marine ecosystem, in any ecosystem, those having the capacity to fix the solar energy into chemical energy are known as producers. तो जब किसी भी इकोसिस्टम में जाओगे तो कुछ स्पीसीज होती हैं जिनमें कैपेसिटी होती है कि सन की रेडिएंट एनर्जी को वो फिक्स कर देते हैं केमिकल एनर्जी में. ठीक है ना. तो जिनमें ऐसी कैपेसिटी होती है कि फोटोसिंथेसिस से वो क्या करें, रेडिएंट एनर्जी को, सन की जो रेडिएंट एनर्जी अर्थ सरफेस पर आ रही है उसको वो फिक्स कर दें, कन्वर्ट कर दें केमिकल एनर्जी में, बॉन्ड एनर्जी में, तो हम उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं. इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स अर्थ के ऊपर कौन है? जिनमें क्लोरोफिल है, द ग्रीन प्लांट्स, द एल्गीज. ओके, such kind of species over the planet Earth are producers. Why? Because this species having ability that they take carbon dioxide from the atmosphere. Carbon dioxide is present, and they also use the water which is available over the planet Earth. The water is available in the soil, and the plant absorb the water through roots. The plant, those who are terrestrial in nature, and those who are in the water, they have the accessibility of the water. So the reservoir of CO2 is what? The atmosphere. The water is also available on the planet Earth. And when the sunlight reached, the sunlight is used by the green plant, algae. Okay. Because why? Because they have chlorophyll. And because of this chlorophyll, they convert this and they fix the sunlight into the chemical energy in the form of bonds. They form glucose. Glucose having bonds. They rearrange the bond and they form what? The organic molecule. The glucose is an organic molecule. Why it is organic molecule? Carbon and its compound present in livings. It built the body of the livings.
Plant utilize this glucose for their own purposes also. Okay, for their growth, for their reproduction, no, to increase their height, weight, girth, उसमें वो यूज भी करते हैं. और जो रिमेनिंग बच जाता है वो स्टोर हो जाता है इन डिफरेंट फॉर्म, उनके स्टेम्स में, उसमें लीव्स में, उसके फ्रूट्स में. और फिर उस इकोसिस्टम में जो हर्बीवोर्स हैं, मरीन इकोसिस्टम में भी कुछ स्पीसीज हर्बीवोर्स हैं. ओके, शाकाहारी. उसे इकोसिस्टम में कहते हैं प्राइमरी क्या, कॉन्ज्यूमर्स. वो कॉन्ज्यूम करता है किसको, इनको, प्रोड्यूसर्स को, प्लांट्स को, एल्गीज को. ठीक है ना. तो प्राइमरी कॉन्ज्यूमर्स ऑफ इकोसिस्टम आर ऑलवेज हर्बीवोर्स. वो हमेशा शाकाहारी होंगे क्योंकि वो क्या खाएंगे, हरे पौधे, एल्गीज, वो जो कि इसमें. अब इसमें जो एनर्जी है ना, यही एनर्जी उस कंज्यूमर को मिलेगा. ठीक है, उसी से उनका ग्रोथ होगा, उनका डेवलपमेंट होगा. उनको जो एनर्जी चाहिए अपनी एक्टिविटीज के लिए वो यहां से ट्रांसफर होगा. तो इस प्लैनेट अर्थ पर ये प्रोड्यूसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मरीन इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, प्रोडक्शन जितना हाई होगा, डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा होगी स्पीसीज. जिस इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स की संख्या कम होगी और इसका प्रोडक्शन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कम होगा, प्रोडक्टिविटी उस इकोसिस्टम की कम होगी, तो डाइवर्सिटी भी कम होगा, वहां स्पीसीज कम होंगे क्योंकि हर्बीवोर्स की संख्या कम होगी. तो उसके ऊपर कार्निवोर्स जो है, जो सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर है, ऑब्वियसली उनका नंबर रिड्यूस होगा. So that's why when you compare, further I will discuss when the ecosystem concepts, okay, in ecology and environmental section, then I will tell you why the productivity of the tropical rainforest is high, why the productivity of the coral reef region is high, but why the productivity of the open sea is low. In open sea, there is a lack of inorganic substances, which is again essential for the development of the species. Okay. Why in the desertic area the productivity is less? Because in desertic area there is a lack of water, and water, that is the inorganic mineral, is essential for the photosynthesis. And apart from that, in this reaction, the oxygen is released plus water is also released. That oxygen is essential for us, all the livings, especially those who are terrestrial, use atmospheric oxygen. So what I have said that in marine ecosystem, ocean is a marine ecosystem. In continental shelf region, where the water is shallow, the light is penetrated. Okay, the light penetration of light is also depend on various factors, whether water is polluted or not, or what is the density of the particulate matter, their turbidity and all. But of course, the water is penetrated, algal bloom is there, and that's why lots of species are available there. So what I have written here, that 90% of the marine, biotic and oceanic mineral wealth like oil and natural gas are present, as well as what I wanted to tell you, because of availability, what I have said, great use of marine food entirely from here. 20% of the world production of the oil gases, fishing ground is also the continental shelf or the fishing ground, and sand and gravel we can extract. So not only we can extract the inorganic minerals from the continental shelf regions, but also we extract what?
the mineral fuels or the fossil fuels. Apart from that, what we extract, the organic materials like the fishes. Fishes are organic, means living, and other products, other marine products. Further, we will discuss in the marine resources the different species, their distribution, and all. So, this self reason is economically very, very important for a human being. Okay. So this is about the continental shelf. Apart from that, when you look at what I have said, that it occupies 7.5% of the ocean surface in general, overall, when you compare. Okay. But regionally, when you move, regionally, at regional scale, there is a variation of the self reason. Regionally, when you compare, okay, what you observe, 13.3%, 5.7%, and 4.2%. The aerial coverage, where in Atlantic, the shelf is wider. 13.3% part of Atlantic is continental shelf, and average 7.5%, what I have said. Okay, when you compare the entire oceans, calculated the distribution of self. Okay, in Pacific 5.7%, as well as in the Indian Ocean 4.2%. This is the regional distribution. तो एक तो आपसे जीएस लेवल पे तो वो जनरल पूछेगा 7.5. In Savinder Singh it is written 8.6%. Okay, but 7.5 follow this. Okay, now when you look at, अब यहाँ कंपैरिजन करें इंडिया में, क्योंकि अभी इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर अगर हम ओशियनोग्राफी पढ़ रहे हैं तो look at the, because India having huge coastline. One side there is a Bay of Bengal, the part of the Indian Ocean, another side the Arabian Sea, again the part of Indian Ocean. So when you look at the eastern side of India, the shelf 50 kilometer. When you look at the western coast, 150 kilometer. In which sides the continental shelf is much more wider? In the western coast. Okay, try to understand. Again, this information is important for your examination. You must keep in mind. So first, what I had discussed at entire global scale, what is the distribution, what is the percentage? 7.5%. At regional scales, I had discussed about three important oceans. What? The Atlantic, Pacific, and Indian Ocean. And specifically from India point of view, what I had given you the idea and information about the eastern and western coast continental shelf. Okay. Now, when you move, अब देखो यहाँ पर भी इंडिया में भी, अब मैंने तो बता दिया कि ठीक है इतना है, बट इसमें भी वेरिएशन तुम्हें दिखाई देगा. थोड़ा और अगर हम जाए वर्टिकल, अगर डेप्थ में थोड़ा जाएं और उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ को एक्सप्लोर करें, तो हमें एक इंफॉर्मेशन और क्या मिलेगा कि द शेल्फ आर नैरोअर 30 to 35 kilometer wide only, where at the mouth of certain rivers. What are the rivers? जहाँ वो ड्रेन करती हैं, गंगा. Huge sediment it carries, form delta known as Sundarban. Okay, where the shelf is narrow, 30 to 35 kilometer, not 50 kilometer wide, because it is also in the eastern coast. The Ganga drains in the Bay of Bengal. And what I have said, that in the eastern coast of India, the continental shelf is almost 50 kilometer wide. No, the seaboard when you move. But here it is narrow. And
अनदर माइटी रिवर कृष्णा, कृष्णा जहां गिरती है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनते हैं, कावेरी. So along the mouth of this river, the continental shelf is narrow, not very wide. Getting my point? Okay, these are wider, but interestingly, यहाँ delta formation है. But जहाँ estuaries बनाते हैं, नर्मदा ताप्ती, they are draining into the Arabian Sea, form the estuaries. Okay, where the base of the what? The river is below the sea water is entering into the river valley, form the estuaries. Okay. अब वहां जहां एस्चुरीज बनते हैं वहां क्या बताया, वाइडर शेल्फ है अलोंग द नर्मदा एंड तापी एंड माही रिवर्स. ये याद रखना, ठीक है ना. दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू मस्ट remember it. Now when we talk about the average slope and the gradient of the shelf, okay, तो मैंने आपको बताया था कि 1 to 2 डिग्री है ग्रेडियंट, ठीक है. अभी स्लोप के बारे में देखेंगे. इंटरेस्टिंग फैक्ट, द एवरेज स्लोप ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द ईस्टर्न इंडियन कोस्ट क्या है, 21 डिग्री. ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया कितना है स्लोप, 21 डिग्री का. और देखो, वेयर एज इट इज 10 डिग्री नियर द केप कैमोरिन, 1 डिग्री नियर द गल्फ ऑफ कैम्बे. गल्फ ऑफ कैम्बे और द गल्फ ऑफ काम्बद किधर है, गुजरात कोस्ट, यानी वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया. तो गल्फ ऑफ कैम्बे क्या है, 1 डिग्री. केप कैमोरिन in the southern part, the gradient varies 10 degree, and eastern part 21 degree. तो ये भी क्या है कि स्लोप भी वैरी करता है. तो एक आपने एवरेज आइडिया ले लिया और एक फिर रीजनल पढ़ते हो, तो रीजनल जब आप पढ़ते हो तो फिर वैरी करेगा. गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है. सो जब आप इंडिया पढ़ेंगे तो दिस इंफॉर्मेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट एंड वाइटल. फिर मैं वहां पे रिपीट करूंगा, बट आपको याद होना चाहिए, ठीक है. once you revising the things, you have to links the dots. Okay, now other information, what are the factors which controls the continental self geomorphology? There are various factors which control the geomorphology of continental shelf, like tectonic activity. अर्थक्वेक आता है और सी फ्लोर ऊपर और नीचे जाते हैं, उससे भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर फर्क पड़ता है. सी लेवल चेंज होता है तब भी फर्क आएगा. So there are various factors which control the geomorphology of continental shelf. मान लो कि वाटर है और वाटर ग्लेशिएट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया, तो वाटर रिट्रीट होगा, सी का लेवल चला जाएगा नीचे, तो कुछ जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो इमर्ज हो जाएगा, नहीं होगा. और अगर सी लेवल इंक्रीज कर जाए, ठीक है ना, इंटरग्लेशिएशन फेज आ जाए, आइस मेल्ट होने लगे, तो जो लैंड का पार्ट है वो और समर्ज हो जाएगा, नहीं होगा. So the change in the sea level also affect the geomorphology of the shelf, like that tectonic activity. Tectonic activity sometimes क्या होता है, emergence of the land, subsidence of the land. When the subsidence of the land takes place, the water क्या करेगा, submerge कर देगा land को. So the geomorphology of shelf controlled by various factors. So what I have mentioned first, the distributions. अब जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में तुम लोगों के साथ जब मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने वहाँ पर लैंडफॉर्म्स डिस्कस किया था, और मैंने वहाँ पर कोस्टल लैंडफॉर्म भी डिस्कस किया था. मैंने थोड़े वेव के फीचर्स भी बताए थे.
ठीक है, मैंने थोड़ा कोस्टल मॉर्फोलॉजी भी बताया था, टोपोग्राफी भी बताया था। मैंने बताया था कोस्टल एरिया में वेव इरोजन से क्या लैंड फॉर्म बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं। मैंने शोर के भी आइडियाज दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ शोर। तो क्या है, मैंने यहाँ मेंशन किया है एक वर्ड फोर शोर। याद आ रहा है फोर शोर क्या होता है? भूल गए होगे ना आप लोग? ब्रेन बहुत हेल्दी है, जल्दी भूल जाते हैं आप। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड फ्रॉम द बीच। आप सी बीचेस जाते हैं घूमने, ठीक है, लोग तो वही जाते हैं कोस्टल एरिया में घूमने के लिए, ठीक है। दैट इज नोन एज फोर शोर, ओके, इन द कोस्टल geomorphology. सो द कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहां से कहां तक है? मैंने कहा शीवर्ड लिमिट इज 100 फैथम, ठीक है। दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं? फोर शोर रीजन, यानी बीच से लेकर और कहां तक जाएगा आगे एक्सटेंडेड होगा? अक्रॉस द शोर फेस टू एन ऑफ शोर लोकेशन वेयर द शीवर्ड dipping low gradient 1:2000 shelf gives way to the shelf break to a steeper gradient of continental shelf. What does it mean? बोला कि बीचेस से लेकर वहां तक जहां तक कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट होता है, द ग्रेडियंट विच सडनली इंक्रीजेस स्लाइटली, उस रीजन तक क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो बोला फोर शोर यानी बीच से लेकर ऑफ शोर, जब आप ओशन में जाते हैं हम कहते हैं ऑफ शोर। यहां पर कहा? वेयर द ग्रेडियंट इंक्रीजेज एंड द स्लोप स्टार्ट, टिल दैट रीजन द स्ट्रेच ऑफ द ओशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओके। नाउ so what I have mentioned here, that the shelf thus bounded inclusively by the shore face and the shelf break. shelf break क्या हो गया? जहां से स्लोप स्टार्ट हो वही तो shelf break हो गया, okay. So there are multiple way to define what? There are multiple way to define the continental shelf. अब है कि तुम कैसे लिख पाते हो, what the ideas you can recollect in your mind, okay, how you can able to define this shelf. Why I'm talking about the shelf in detail? Because it may be a separate potential short notes, okay. इसके ऊपर भी short notes बन सकता है, ओवरऑल भी बॉटम टोपोग्राफी पे फुल या शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ओवर इट, ओके। नाउ when you look at what are the major control factors, what are the factors which control the geomorphology of the continental shelf? मैंने क्या लिखा इधर? बोला टेक्टोनिक शेटिंग्स, the tectonic activities controls the sea level changes, the history of sea level change. When you learn, you find the continental shelf change with the time. Then what are the other factor? Glaciation, because glaciation and interglaciation led to the change in the sea level. Eustachian static phenomena is also led to the sea level change. I had given you the example. The rate and the type of sediment supply, the sediment which is carried by the wind and water in the ocean, okay, also control the geomorphology of continental shelf. Yesterday during the discussion, what I have said, that in the shelf or the slope region, what is the characteristic feature in the slope region is the canyon. And why the canyon form? Because of turbidity current. Why the turbidity of the sea increases? Because of huge amount of sediment carried by the rivers and the winds in the water, okay. And due to the frictional force created by the turbid current, the scratches created and the deep canyons forms.
सो सेडिमेंट्स ने कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप का क्या करता है, वो जियोमॉर्फोलॉजी डिटरमाइन करता है, ठीक है ना, कैसा शेप है, कैसा स्ट्रक्चर है। एंड एनर्जी अवेलेबल टू इरोड बिकॉज अभी मैं जब ओरिजिन ऑफ सेल्फ पढ़ाऊंगा बैरियर्स थ्योरी, उसमें एक थ्योरी होगा इरोजनल कॉन्सेप्ट। ड्यू टू मरीन इरोजन बाय द वेव्स एंड करेंट्स द शेल फॉर्म्स according to few oceanographer and scientists। तो इरोजनल एक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, वाटर की एनर्जी पर। ओके ऑब्वियसली उसके ऊपर rework and disperse sediment. So what are the major factor which control what I have said, tectonic activity. What are the other factor what I play, change in the sea level and the process of glaciation and interglaciation. Other factors how what the controls the geomorphology is the amount of sediment and the energy level, the dispersal of the sediments etc. तो इन बातों पर डिपेंड करता है। Again, you should keep in mind these factors in your mind. Now, अब देखो, कई बार जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ का शेप देखोगे, उसकी जियोमॉर्फोलॉजी देखोगे, आउटर स्ट्रक्चर, it is not determined by the single factor, sometimes by the act of multiple factor together. इसीलिए मैंने कहा ओवरलैप भी दिखता है आपको। कई बार more than one factor are interacting simultaneously and shape the morphology of the continental shelf. ऐसा तो नहीं है कि इरोजनल वर्क हो रहा है तो टेक्टोनिक एक्टिविटी रुक गई है। टेक्टोनिक एक्टिविटी तो कभी भी आ सकती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है सेडिमेंट का अमाउंट ऐसे विंड को बोल दिया अभी थोड़ा लोड कम रखो मेरे ऊपर या वाटर कैरी कर रहे हैं तो कुछ कम हो गया, वो तो कॉन्टिन्यूसली सप्लाई हो रही है। तो क्या है, मोर देन वन फैक्टर आर शेपिंग व्हाट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? So you have to understand it. Now when you look at, these are the active tectonic region, and what I have showed that when you look at this continental margin, the pink color shows the active continental margin and the blue color shows the passive continent. This is the Pacific ring of fire. जब प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो यहाँ देखोगे प्लेट बाउंड्रीज है, and along this plate boundaries यहाँ क्या है, the Pacific is this is the Pacific plate, the Pacific plate subducting beneath this Eurasian plate। क्या है, अर्थ के ऊपर अर्थ का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट पीसेज में, ओके। द पीस ऑफ दैट लिथोस्फीयर इज नोन एज प्लेट and these plates are interacting with each other. Either the two plates are moving towards each other, then we called it what, convergence. When two plates are moving apart from each other, they are known as divergence. तो हमने क्या देखा कि जब पैसिफिक जो है एक बड़ा ह्यूज प्लेट है जिसके ऊपर पैसिफिक ओशन है, और ये पैसिफिक मूव जो कर रहा है वो किधर की तरफ कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया की तरफ कर, मूविंग टुवर्ड्स दिस वे। और जब ये मूव कर रहा है इधर की तरफ तो पैसिफिक इज वेरी हैवी प्लेट, वेरी लार्ज एंड हैवी एंड लार्जली ओशियनिक इन कैरेक्टर। और ओशियनिक प्लेट जो होते हैं वो बेसिकली बसाल्टिक ओरिजिन के होते हैं, उनके रॉक्स जो हैं। और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है लार्जली एंडेसाइटिक ग्रेनाइटिक ओरिजिन के होते हैं। तो ये बोथ आर इग्नियस रॉक्स, बट एक डेंसर होता है एक लाइटर होता है इफ यू कंपेयर द डेंसिटी। So the heavier plate, of course, when two plates moves towards each other, the heavier plate subducted beneath the lighter, वो नीचे जाने लगता है towards the mantle, the lower layer of the earth. Okay.
सो वेयर द इंटरेक्शन इज मोर, यहाँ सबडक्शन जाएगा तो एक्टिव टेक्टोनिक, यहाँ पर अर्थक्वेक वोल्केनो के चांसेस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, प्लेट इंटरेक्शन है। तो दिस इज नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्यों कहते हैं यहाँ, क्योंकि अक्सर यहाँ अर्थक्वेक और वोल्केनो आते रहते हैं। सो दिस इंटायर रीजन इज वेरी एक्टिव रीजन। जहां जहां भी आपको पिंक कलर दिख रहा है, ठीक है, वो सारे एक्टिव रीजन हैं ग्लोब के ऊपर। फिर आपको मैंने बताया था अल्पाइन चेन जो है, अल्पाइन चेन जैसे हिमालय, आल्प्स। हिमालय का फॉर्मेशन क्यों हुआ, इंडियन प्लेट इज सबडक्टिंग बीनीथ द यूरेशियन। यहाँ भी दो प्लेट्स एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं, जिसके कारण बीच में एक ओशियन था टेथिस, उसके सेडिमेंट राइज हो गए, फोल्ड हो गए, माउंटेन बन गया, एक बड़ा माउंटेन हिमालयस। उसी तरह से अगर हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका में, तो हमें क्या दिखाई देता है, ये देखो, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ रॉकीज है, यहाँ एंडीज है, ठीक है, ये माउंटेन्स हैं, माउंटेन चेन। क्यों बने, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। मैंने बताया था कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं, कोकोश, नास्का, ठीक है। Due to interaction of these plates with the South and North American plate, what happened? The Rockies and the Andes mountain forms. अब ये जो रॉकीज और एंडीज माउंटेन देखोगे तो कई वोल्केनिक पिक्स हैं यहाँ, है कि नहीं, कोटोपैक्सी, चिम्बेरोजो, अकंकागुआ, ओजास डेल सेलेडो, ये सारे पिक्स के नेम है कि नहीं, माउंट लोगन, माउंट मैकिनली, माउंट वेडिंगटन, माउंट वाशिंगटन, these are the name of the peaks, those who are there, those who, वो पिक क्या है, वो वोल्केनिक पिक है। वोल्केनो कब इरप्ट होता है, जब प्लेट नीचे गया, मेल्ट हुआ, मैग्मा बना, मैग्मा ने ब्रेक किया क्रस्ट, ऊपर वोल्केनो राइज की। सो दीज रीजन्स आर द एक्टिव टेक्टोनिक रीजन। तो यहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा अफेक्ट होगा, because this is very active zone which shape the morphology of the continental shelf. Getting my point, yes or no? But apart from that, other reasons which is blue in color are the passive tectonic belt. उतना नहीं है, because this reason is, अब ये देखो, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल प्लेट, डिस्पाइट देयर इज अ मिड ओशियन रिजेस आर देयर, डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है। व्हेन यू लुक एट इन अटलांटिक देयर इज अ डाइवर्जेंस, यहाँ बीच में डाइवर्जेंस होता है, यानी दो साइड में अटलांटिक मूव कर रही है, और अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में गैप थोड़ा वाइड होता जा रहा है, बिकॉज अटलांटिक इज स्प्रेडिंग, डाइवर्जिंग, ओके। वहां भी देखोगे अटलांटिक में बहुत सारे वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, ओके। देयर इज अ लार्जेस्ट रीज present in the Atlantic, longest, okay. So what I had discussed, there are various factors which control what the shape, geomorphology means what the outer structure of the shelf. Now let's talk about the origin of the continental shelf. What I have said that there are various authorities, various views, various oceanographers having different opinions. तो मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट नहीं है, यूनानिमिटी नहीं है ओशियनोग्राफर के बीच में, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट के बीच में, जियोग्राफर साइंटिस्ट के बीच में, कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे बना, क्योंकि शेल्फ कई टाइप के हैं। मैंने कहा इन जनरल ग्रेडियंट 1 to 2 डिग्री है, लेकिन कहीं पर ग्रेडियंट 21 डिग्री है, कहीं तो 40 डिग्री भी है, अब सरप्राइज हो जाओगे, शेप अलग अलग है। तो जब आइडेंटिफाई करना शुरू किया, शेल्फ की स्टडी करना शुरू किया, तो ये क्यों अलग शेप का है, कहीं विड्थ ज़्यादा कहीं कम, क्या रीज़न है, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए।
उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं लेकर आया हूं तुम लोगों के लिए, यानी कुछ कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने सिंपल इसमें डिस्कशन रखा है क्या, मैंने यहां बताया अभी कि इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एग्जैक्ट मोड ऑफ ओरिजिन, क्योंकि एग्जैक्ट मोड नहीं है, मैंने कहा डिफरेंट ओपिनियंस है, उसमें कुछ ओपिनियंस पॉपुलर है, मैं उन कुछ पॉपुलर ओपिनियंस को लेकर आया, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट आई हैव सेड व्हाई देयर इज डिफिकल्टीज टू एक्सप्लेन एग्जैक्ट मोड, रीजन भी बताया, बिकॉज कॉन्टिनेंटल शेल्फ को देखोगे अगर तो वैरिड नेचर का है, द नेचर ऑफ सेल्फ वैरिड, उसका कॉम्पोजिशन भी अलग है। When you compare the shelf of Pacific, Atlantic, even in the Pacific, the northern and southern, what you find, the nature change, the composition change, the extensions. अभी तो मैंने इंडिया में ही बताया ईस्टर्न कोस्ट इन जनरल 50, बट फिर मैंने कहा गंगा देखो, कावेरी देखो, कृष्णा देखो, यहाँ क्या है, नैरो है शेल्फ। तो एक्सटेंशंस अगर आप देखेंगे वो भी वैरिड एक्सटेंशंस है, ठीक है, और डेप्थ भी वैरी करता है, स्लोप भी वैरी करता है, अभी तो बताया आपको, और एविडेंसेस भी दिए, डेटा दिया, उसके थ्रू बताया ना। अब है कि अब इतनी सारी वेरिएशंस है तो एक थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन करोगे सारे वेरिएशंस को, पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए देयर आर वेरियस ओपिनियंस विच इज फ्लोटिंग राइट नाउ। What are the most important opinions given by the oceanographer? One concept I had mentioned. I had mentioned here the various theories of origin of continental shelves. बट मैंने बहुत एग्जिग्रेट नहीं किया है, बहुत ब्रीफ लिख कर लेकर आया हूँ समझाने के, आपको ये समझना आइडिया। पहली थ्योरीज क्या कहती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर बेसिकली एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ व्हाट, कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म। कुछ जियोग्राफर ओशियनोग्राफर का मानना है कि ये क्या है, नथिंग बट प्लेटफॉर्म, इट इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म। हाउ इट फॉर्म्स, तो बताया ड्यू टू मरीन इरोजन एंड फ्लूवियल डिपोजिशन। फ्लूवियल वर्ड वाटर के लिए यूज करते हैं। तो क्या था, इन्होंने क्या कहा कि से फॉर एग्जाम्पल if you find out, yes, so if the water came and interact and the water started eroding, ये ऐसे कट करने लगता है water, this, here there is a sea, here there is a land, जो सी वेव्स आते हैं वो लैंड से इंटरैक्ट करते हैं, इसको कट करते हैं, और कट करने के बाद फिर क्या होगा, देयर इज अ प्लेटफॉर्म्स विच फॉर्म्स, ठीक है। ये जो रीजन था, ये वेव ने कट कर दिया इस रीजन को, तो ये जो कहलाता है वेव कट प्लेटफॉर्म्स। तो व्हाट ही शेड, अब फिर ये तो वाटर से समझ हो गया ना रीजन, पहले लैंड यहाँ तक था, अब ये आगे तक वाटर आ जाएगा, क्योंकि वो तो वाटर ने क्या कर लिया, इरोड कर दिया। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू फ्यू ओशियनोग्राफर, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म। हाउ दिस प्लेटफॉर्म फॉर्म, ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेव्स, ड्यू टू द वेव इरोजन। So what I have mentioned, due to the marine erosion and the fluvial deposition, अभी इधर से नदियां आ रही हैं तो यहीं पे डिपॉजिट कर रही हैं, इसके ऊपर सेडिमेंट जमा हो रहे हैं, नहीं हो रहे, रिवर्स तो लैंड से ही आएगी ना टुवर्ड्स द सी, तो फ्लूवियल डिपॉजिट कैरिड बाय द रिवर्स डिपॉजिटेड
along the mouth of the river, जहां ड्रेन करती है रिवर, गिरती है, माउथ कहते हैं। डिपॉजिट तो वही होगा, सी के द्वारा, वेव्स के द्वारा पीछे लाया जाता है, एक्सटेंड होता रहता है। तो लाइक दैट द शेल फॉर्म, यह कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहला क्या मानना है कुछ ओशियनोग्राफर का कि कैसे बना कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देखो नेक्स्ट आइडियाज, लुक एट द नेक्स्ट आइडियाज। एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कहते हैं कंस्ट्रक्शनल। अभी तो तुमने इरोजनल आइडिया देखा, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव आइडिया देखें। एक नई थ्योरीज क्या है, कहते हैं कि द कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर फॉर्म्ड थ्रू प्रोलॉन्ग्ड डिपोजिशन। किसका डिपोजिशन? बोला डेट्रिटिस। डेट्रिटिस किसे कहते हैं? डेड डिकेइंग मटेरियल। डेड डिकेइंग मटेरियल कैरीड बाय द फ्लूवियल, it is a fluvial deposit carried by the rivers। प्रोलॉन्ग डिपॉजिट, कई वर्षों से ले आकर नदियां डिपॉजिट करते 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 एक क्या फ्लैट सरफेस बना दी विथ जेंटल ग्रेडियंट। ओके, लिखा है ना, ब्रॉट बाय द रिवर स्पेशली इन द काम कंडीशंस। सी का वाटर काम है, काम नहीं रहता तो क्या होता है, डिपॉजिट्स वहां स्टोर नहीं होती। तो कहता है ऐसे ओशियंस में जहां काम कंडीशंस है, वहां रिवर्स जो डिपॉजिट्स लाती हैं कई वर्षों से, वो धीरे 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 वहां जमा होकर और क्या बनाता है, एक जेंटल ग्रेडियंट के साथ सरफेस ऑफ बॉटम ऑफ द सी बनाता है, उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, एंड दैट्स वाई such continental shelves are known as constructional and more extensive in nature। कंस्ट्रक्शनल कहलाता है, नॉट इरोजनल, क्योंकि इरोजनल एक्टिविटी से नहीं बना, डिपोजिशनल एक्टिविटी से नहीं। डिपोजिशन ऑफ detritus, dead decaying substances below the water। okay, these substances carried by the rivers and must remember under calm condition। ठीक है, so this is the second concept about the origin। now let's learn the next concept। 4-5 concept लेकर आया हूं, समझ लो। सॉरी। अब देखो, कन्वेक्टिव करंट का कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने बताया था कि जो अर्थ है, when the earth was formed according to the big bang concept, the earth was very hot and magnetic। gradually from the surface the heat released in the universe, in the space। यहाँ से धीरे धीरे heat release हुआ, all the hot bodies, the black bodies release the heat। ठीक है ना, बार बार एग्जांपल देता हूँ, तवा स्टोव बंद कर देते हो तो तवा धीरे धीरे ठंडा होता है, क्यों? हीट रेडिएट करता है। तो ये जब हीट रेडिएट करने लगा तो सरफेस कूल होने लगा, सरफेस कूल होने लगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, सॉलिडिफाई होने लगा, और सबसे पहले रॉक बने इग्नियस रॉक्स। हमने देखा क्रस्ट सॉलिड हो गया, बट अभी भी विद इन द इंटीरियर काफी एनर्जी इंट्रैप्ड है, and the rocks are in the form of magma। why? Another factor what I have shared, that if you go through the composition of the earth, what you find that earth having various elements, और उसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। those who are heavier, उनका एटॉमिक वेट ज़्यादा है। अब चूंकि उनका एटॉमिक वेट उन एलिमेंट का ज़्यादा था, वो इस जब मैग्नेटिक फॉर्म में अर्थ था, मीन्स फ्लूइड फॉर्म में, वो शिंक करते गए सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, ड्यू टू ग्रेविटी वो शिंक किया। जो हैवियर होगा वो नीचे की तरफ चलता चला जाएगा।
So in the mantle and the core region, there huge amount of radioactive substances are there, and the radioactive substances radiates what? The alpha, gamma and beta rays. उनको यहाँ रख दोगे तो रेडिएशन निकलता है. Okay. That energy which released within the earth melted the rocks, and the rocks are in fluid forms. We called it magma. That energy which creates inside started moving in a conveyor belt fashion. जैसे साइकिल का रिंग देखा है, ऐसे ऐसे घूमता है, वैसे ही साइकिल के चेन की तरह ये एनर्जी अंदर में अर्थ के ऐसे घूमती है. तो हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट. द आइडिया इज गिवन बाय आर्थर होम्स. आई हैड डिस्कस्ड अर्लियर. So here what the energy is moving in what? The conveyor belt fashion. ये अर्थ है, अंदर में मैंने बताया था कि एनर्जी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे. Like that. We called it convection current. ये क्रस्ट है. तो अर्थ के इंटीरियर में ऐसे एनर्जी मूव करती है. ओके. तो मैंने क्या वर्ड यूज किया है? मैंने यूज किया है कि राइजिंग थर्मल कन्वेक्टिव करंट्स. अब यहां देखो, दिस इज द राइजिंग करंट्स एंड दिस इज द डिसेंडिंग करंट्स. एक लिम्ब नीचे की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ आ रहा है. ऊपर आ रहा है तो क्या कहेंगे? राइजिंग. ऊपर का मतलब टुवर्ड्स द क्रस्ट. तो लिखा है द राइजिंग कन्वेक्टिव थर्मल करंट्स फ्रॉम बीनीथ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन बेसिन्स. तो इसी क्रस्ट के ऊपर कॉन्टिनेंट भी हैं, बेसिन्स भी हैं, है कि नहीं? तो हम लोग इनके नीचे की बात कर रहे हैं जहां राइजिंग है. क्या बोला? कन्वर्ज अलोंग द कॉन्टिनेंट ओशियन बाउंड्रीज. ओके. एंड डिसेंड. Resultant compressive force causes subsidence of the continental margin. बोला इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जहां कॉन्टिनेंट ओशियन बाउंड्रीज है वहां क्या हो रहा है? ये राइजिंग थर्मल कन्वेक्टिव करंट अलोंग दिस कन्वर्ज हो रहा है. ये राइजिंग करंट कन्वर्ज हो रहा है. ठीक है. कन्वर्ज हो रहे हैं तो कॉम्प्रेसिव फोर्स बनेगा. बनेगा कि नहीं? उस कॉम्प्रेसिव फोर्स के कारण रिजल्टेंट कॉम्प्रेसिव फोर्स लिखा है. व्हेन टू फोर्सेस कम टुवर्ड्स अ पॉइंट, दोनों तरफ से प्रेशर आएगा तो यहाँ पर कॉम्प्रेशन होगा. यहाँ पे जो रॉक्स होंगे वो मुड़ेंगे नहीं. दो एनर्जी आ रही है दो साइड से. उसके कारण क्या बोला कि इट कॉजेस सबसिडेंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन. उसके कारण इन्होंने कहा कॉन्टिनेंटल मार्जिन सबसाइड कर जाता. वेयर दिस कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्ट, जहां कॉन्टिनेंट ओशियन का क्या है? बाउंड्री. वहां ये कॉम्प्रेसिव फोर्सेस काम करते हैं और ये जो कॉन्टिनेंट है और सबसाइड कर गया. कॉन्टिनेंट और सबसाइड कर गया तो ओशियन का वाटर और आगे बढ़ गया, नए शेल्फ बन गए. तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से बात करता है कि ये जो शेल्फ बनने के पीछे जो इंटीरियर कन्वेक्टिव करंट है वो रिस्पॉन्सिबल है. द एनर्जी विच इज मूविंग विद इन द अर्थ सरफेस, that rise, that converge towards each other along the continent ocean margin, and due to compression forces the continental parts what? Subside, and the water moves towards the land and submerges some part of the continent and form the new continent itself.
This is another concept. Okay. Now next, तो एक मैंने बताया कि वेव के द्वारा इरोड होके बना है, दूसरा बताया डेट्रिटस आए और जमा होके बना है, तीसरा बताया कन्वेक्टिव करंट जो अर्थ के इंटीरियर में बने हैं उनके कारण कॉम्प्रेसिव फोर्सेस आया और उसके कारण सब्सिडेंस हुआ, वो भी कॉन्टिनेंटल रीजन का, और ओशियन का वाटर आगे आके समर्ज कर दिया और सेल्फ बना। तो मैंने 3 आइडियाज शेयर किए। अब थोड़ा नेक्स्ट आइडियाज भी देख लें। और टेक्टोनिक एक्टिविटी, tectonic activity means due to plate movement the earthquakes takes place at convergent, divergent as well as transform boundaries। मैंने कहा दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक हैवियर लाइटर के नीचे जाता है, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। दो प्लेट दूसरे जाए, डाइवर्जेंस, दो प्लेट एक दूसरे के साइड वाइज स्कीड करें, न दूर जाए न नीचे जाए, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, इन तीनों बाउंड्री के अलोंग अर्थक्वेक आते हैं जहां प्लेट ऐसे मूवमेंट कर। अब इनको टेक्टोनिक रीजन कहते हैं। बट वोल्केनो ट्रांसफॉर्म एरिया में नहीं आएगा क्योंकि मैग्मा को निकलने के लिए या तो सबडक्शन चाहिए या दो प्लेट दूसरे से दूर जाने चाहिए। ठीक है, तभी वोल्केनो इरप्ट हो। मैंने वो यूज किया है वर्ड टेक्टोनिक। नहीं, टेक्टोनिक कहते हैं मूवमेंट को, मैंने बताया था। What is the meaning of tectonic? Tectonic represent dynamicity, the movement of the plate. So it means that the plate movement also responsible for the formation of continental shelf. No, then how the geographer define this concept? थोड़ा ही थोड़ा लिखा है, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, एक बेसिक आइडिया चाहिए। और थोड़ा डिटेल केवल शेल्फ ही बता रहा हूँ, नॉट अबाउट स्लोप एंड ऑल, बिकॉज मैंने कहा इट इज़ अ पोटेंशियल शॉर्ट नोट्स। ओके, नाउ so tectonically formed continental shelves are formed due to the formation of parallel faults along the continental margins. Okay, if this is the continental margin और इस कॉन्टिनेंटल मार्जिन में यहाँ क्रैक्स डेवलप हो, इस क्रैक पहले डेवलप हुआ, क्रैक डेवलप होने के बाद जब रॉक लूज हो जाता है हम इसे फॉल्ट कहते हैं, बिकॉज अ गैप इज क्रिएट along that fault। इधर के जो रॉक्स हैं वो नीचे चले गए, सबसाइड कर गए, चांसेस है, बिकॉज इफ दिस इज द कॉन्टिनेंटल मार्जिन and a crack is created, the crack is widened, we called it fault, along this fault ये रॉक नीचे चला गया। ये जैसे ही नीचे जाएगा, इधर ओशियन है बिकॉज इट इज कॉन्टिनेंटल मार्जिन, तो किनारा ही है कॉन्टिनेंट का, इधर ओशियन है, ओशियन का वाटर और आगे आ जाएगा, ये रीजन समझ हो जाएगा, ये शेल्फ बन जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट, टोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एम आई क्लियर? Okay, now what is the next one? अब देखो, एक डैली साहब है, डैली, पिंक, ये सब कई बार नाम आएंगे, ठीक है, जियोग्राफी में। तो अभी कोरल्स भी पढ़ेंगे ओशियोनोग्राफी में, वहाँ भी इनके थ्योरीज पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। तो वेरी फेमस जियोग्राफर R.A. डैली। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डैली? इन्होंने सी लेवल चेंज के कॉन्सेप्ट के थ्रू डिफाइन किया, फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि द चेंज इन द सी लेवल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल। ठीक है, अर्थ कब फॉर्म किया? बोला 4.6 बिलियन बिफोर प्रेजेंट। ठीक है ना, 4600 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ फॉर्म, और तब से लेकर अभी तक अर्थ को कई जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में डिवाइड कर कर पढ़ते हैं। उसमें से एक इपो है प्लिस्टोसिन। क्या नाम है उसका? प्लिस्टोसिन। नहीं पूछूंगा आपसे कि किस से किस टाइम पीरियड को कहते हैं, क्योंकि आपको याद भी नहीं होगा, आप इस सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते ना। मैंने कहा आप लोग का ब्रेन बहुत हेल्दी है, चीज़ें याद नहीं रखते। ठीक है, R.A. डैली
व्हाट ही ओपाइन दैट द सी लेवल फेल, इन्होंने कहा सी लेवल डाउन हो गया। बोला कब डाउन हुआ? बोला ड्यूरिंग द प्लीस्टोसिन आइस एज, वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू द आइस एंड दैट्स व्हाई द सी लेवल डाउन हो गया। कब? बोला प्लीस्टोसिन में। ठीक है ना? मिल गया कितने से कितने ईयर में? अभी कौन सा चल रहा है? सबसे ऊपर क्या लिखा है? बोला सीनोजोइक। उसके अंदर क्या इपो लिखा हुआ है? बोला अभी होलोशीन चल रहा है। अभी उसके पहले का पीरियड क्या था? और उसके पहले देखो, एंड प्लीस्टोसिन 10,000 to 2 million. During that period, what happened? That was the ice age. The water is started converting into ice. So the sea level क्या हो गया? डाउन हो गया। अब सी लेवल डाउन हो गया तो जो सी के अंदर समर्ज लैंड था वो इमर्ज हो गया, ऊपर आ जाएगा ना, लैंड ऊपर आ जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा? विद द रिजल्ट द कॉन्टिनेंटल मार्जिन इमर्ज फ्रॉम द वाटर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द वाटर इज स्टिल हियर बट water receding. Why? Because water is converting into the ice. So sea level down, few part which is earlier submerged now exposed, हम इसे कहेंगे इमर्ज हो गया, पानी के ऊपर आ गया क्योंकि पानी का लेवल नीचे चला गया। अब ये इमर्ज्ड पार्ट के बारे में क्या कहते हैं डैली साहब? देखो, so what he said that this exposed land area were glacially eroded. During that period there is a phase of glaciation. अब ग्लेशियर जब चलते हैं, मूव करते हैं सरफेस के ऊपर, तो ग्लेशियर आर द विस्कस फ्लूइड, दे आल्सो इरोड द रॉक्स। तो ये जो लैंड एक्सपोज्ड हुआ ये इरोड होने लगा, किसके द्वारा? बोला ग्लेशियर्स के द्वारा हुआ। ठीक है, तो इन्होंने कहा ग्लेशियली इरोडेड एंड एक्सटेंसिव प्लेटफॉर्म वर फॉर्म्ड। मैंने जैसे पहले डायग्राम में बताया था ना, वेव ने कट किया लैंड को और प्लेटफॉर्म बनाया। इन्होंने कहा वेव ने नहीं कट किया, ग्लेशियर ने कट करके लैंड का कुछ हिस्सा तोड़ दिया और प्लेटफॉर्म बना दिया। ठीक है, सो से फॉर एग्जाम्पल व्हाट ही वांटेड टू से दैट ये था यहां तक सी, देन सी रिट्रीट बैक, सी इज रिट्रीट बैक। मान लो ये सी रिशीड हो गया यहां तक। अभी ये जो एक्सपोज्ड रीजन है, दिस एक्सपोज्ड रीजन स्टार्टेड इरोडिंग बाय द ग्लेशियर्स, ये ग्लेशियर्स के द्वारा इरोड हुए, ग्लेशियर्स स्टार्टेड मूविंग एंड इरोडिंग, तो ये इनगल्फ कर गया इतना रीजन। तो क्या हुआ ये देखो ये कंडीशन है, ये प्लेटफॉर्म बन गया ग्लेशियली इरोडेड प्लेटफॉर्म, नॉट वेव कट प्लेटफॉर्म। फर्दर इन्होंने क्या कहा? फर्दर फिर एक फेज आया इंटरग्लेशिएशन का, आइस मेल्ट होने लगे, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया और फेज ऑफ इंटरग्लेशिएशन आया, आइस मेल्ट होने लगे, सी का लेवल बढ़ने लगा और ये जो प्लेटफॉर्म बन चुका था ना, सी आगे आ गए और फिर इसको समर्ज कर लिया, नया कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गया। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डैली। तो व्हाट ही सेड दैट कि ड्यू टू डीग्लेशिएशन, फिर से ग्लेशियर मेल्ट हुए, द सी लेवल रोज अगेन एंड दिस platform were submerged under sea water and formed the new continental shelf. नहीं समझ आया? So this is the idea given by Daly. There are various ideas which are floating. अब जो आइडिया दिमाग में उस समय आ जाए तो लिख देना, ठीक है, एग्जाम्स में अगर ओरिजिन के ऊपर आते हैं। तो मैंने फर्स्ट बताया कि
The shelf forms by the wave action, wave erosion. Second, what I have said, that prolonged deposition in a calm condition. Third, मैंने बताया due to convection current. When the convection current limb rises, moves towards each other, the compression forces acts, due to which the continental margin subside and the water is moving forward and submerge this region and form shelf. Then बताया tectonic activity. In the tectonic, due to tectonic activity, sometimes the parallel fault created along the continental margin, and along the fault the rock subsided and the water moves forward and forms the shelf. Landward move करेगा onshore. Then this is the next concept. No? So I had discussed 4-5 odd concepts of the origin of the continental shelf. Is it not? Now, sorry. What I mentioned here, the continental shelves of the India of the Ganga, Godavari, Krishna and Kaveri mouth have been formed through the delta formation. बनता है ना? There is a huge delta because rivers carried huge amount of sediments. Okay. Now I had given you the idea. तो मैंने ईस्टर्न कोस्ट का एक आइडिया दिया तुम्हें. ठीक है. नेक्स्ट देखो, अंडमान निकोबार नाम सुना होगा. ठीक है. So the continental shelves of Andaman Nicobar, Lakshadweep, Gulf of Mannar. Okay. How it originated? It originated due to coral reefs. There are various islands which is formed is a coral island. ये ऑर्गेनिज्म अपने शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं और उससे वो माउंड लाइक फीचर बना देते. That is reef, coral reef. So here the shelf is coral in nature. You must keep in mind what we are learning, the nature of the continental shelf along India. Okay. While the continental shelf of western coast, due to faulting and consequent submergence, मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट कि अभी इंडिया में पढ़ेंगे कि when the Indian plate started moving towards Eurasian plate. तो ये जो अभी आप एट प्रेजेंट इंडिया ये जो देख रहे हो ऑन द ग्लोब, समवेयर इंडिया इज नियर बाई हियर. ये जो रीजन है इंडिया प्लेट का वो यहाँ था. इट स्टार्टेड मूविंग नॉर्थवर्ड एंड इट रीच हियर. द इंडिया वाज कनेक्टेड विथ अफ्रीकन लैंड मास. फिर इंडिया ने ऐसा मूव किया, ये प्लेट रीएडजस्ट किया अपने को, तो यहाँ एक गैप क्रिएट हुआ. दैट बिकम द अरेबियन सी. तो इस रॉक्स को, जो वेस्टर्न कोस्ट के रॉक्स हैं, पहले अफ्रीकन लैंड मास से सपोर्ट था, ये हट गया तो इधर की रॉक्स टूट के नीचे गिर गई, फॉल्ट क्रिएट हुआ. इसीलिए इधर डेप्थ भी ज़्यादा है और स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर है इधर की तरफ से. अरेबियन सी की तरफ से वेस्टर्न घाट्स की तरफ आओगे तो देयर इज अ स्कारपमेंट. क्या है? स्कारपमेंट, लैडर लाइक स्ट्रक्चर. तो मैंने क्या बताया, यहाँ जो बने हैं सेल्फ सबमर्जेंस से बने. ठीक है ना? फॉल्ट हुआ, फॉल्ट के लॉन्ग रॉक्स नीचे स्कीड कर गया. तो मैंने तुम्हें आइडिया दिया कि इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर फॉर्म्स ड्यू टू द डेल्टा, मीन्स द deposits which is carried by the rivers. Along the western coast, the shelf is formed by the subsidence due to the fault. Submergence takes place. Submerged coastline है. ठीक है. और मैंने अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, ये सब क्या है? कोरल. These are the majority island are coral. So here the shelf are coral. Getting my point? So we have to understand these differences again. This is very vital information for you people.
ओके, नाउ कम टू द स्लोप। तो इतना था सेल्फ के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी, नहीं? अब थोड़ा स्लोप के बारे में पढ़े। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है? तो व्हेन यू मूव शीवर्ड्स, तो आफ्टर शेल्फ द स्लोप इज देयर। तो सेल्फ ब्रेक के बाद स्लोप स्टार्ट होगा, ठीक है? तो व्हेन यू, दिस इज सी सरफेस, सी लेवल, this is the continental shelf, now this is continental shelf break, यहाँ से स्लोप स्टार्ट हो। ओके, अभी ग्रेडियंट इंक्रीज हो गया, अभी सेल्फ में भी आपको कैनियन नजर आएगा, डिप्रेशन नजर आएगा, है ना? सेल्फ के बाद अगर देखोगे, तो कॉन्टिनेंटल राइज नजर आएंगे, बिकॉज यहाँ जेंटल स्टीप होते हैं, सेडिमेंट्स कैरिड होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, थोड़ा राइज करते हैं, ठीक है? अब देखो, अभी आपको क्या दिखाई देगा कि इस रीजन्स में ट्रेंचेस और डिप्स भी दिखाई दे, ठीक है? ट्रेंचेस और डिप्स भी दिखाई देते हैं, दीज आर द ट्रेंचेस। इसी ट्रेंच में और गहराई होगी, डीप्स कहते हैं, और द ट्रेंचेस आर वी शेप्ड। तो यहाँ पर आपको शी माउंट भी दिखाई देगा और अबाइशल हिल्स और सी माउंट और अबाइशल हिल। अगर ये टेबल लैंड है तो फ्लैट टॉप सरफेस है तो गियोट्स कहते हैं, गियोट्स। ओके, नाउ अगर फ्लैट सरफेसेस है तो हम इसे कहते हैं अबाइशल प्लेन, abyssal plane. There are various features which present. So what I have said that यहाँ continental shelf break है, यहाँ से स्लोप शुरू हुआ, मैं उसी स्लोप के बारे में बात कर रहा था कि extended beyond the continental shelf, it extended beyond the continental shelf, it is and it has a steep slope, यहाँ slope steep हो गया, ठीक है? Now slope is 2 to 5 degree in general, but it varies from sea to sea, ocean to ocean as like the shelf gradient. But in general 2 to 5. ठीक है? Getting my point? Now पर मैंने मेंशन किया है example. When you look at the Spanish coast, अब स्पेनिश कोस्ट के लिए स्पेन आपके दिमाग में आना चाहिए किधर है, अदरवाइज पता भी नहीं लगेगा। तो 30 डिग्री कितना है वहां ग्रेडियंट, 30 डिग्री।
इन जनरल बोला 2 to 5। अच्छा, सेंट हेलेना आइलैंड, वहां देखो 40 डिग्री, स्लोप इज 40 डिग्री नियर सेंट हेलेना। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, 62 डिग्री नियर द सेंट पॉल। ओके, 5 to 15 डिग्री नियर कैलिकट कोस्ट ऑफ इंडिया। 5 से 15 डिग्री है इंडिया में कैलिकट कोस्ट। सो इट ऑल्सो वेरीड, बट आपको याद क्या रखना है, 2 to 5 डिग्री, दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप इन जनरल। ओके, तो नाउ बताओ, क्लियर, समझ आया कि वेरिएशन भी यहां भी होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आई, शीवर्ड लिमिट 2000 फैथम आइशोबाद। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का क्या था, डेप्थ 100 फैथम तक। जब आप बीच से सी की तरफ आते हैं 100 फैथम की गहराई तक शेल्फ होते हैं इन जनरल, यानी 600 फीट मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दो तो यहाँ 2000 फैथम मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दो तो उतना फिट में गहराई आ जाएगी। तो ये ज़्यादा गहरा है इन कंपैरिजन टू शेल्फ, बिकॉज ग्रेडियंट यहाँ ढाल तीव्र हो गया तो गहराई बढ़ गई, है कि नहीं। नाउ 8.5% of the entire oceanic floor is occupied by flow. बट अगेन सी टू सी वेरी करेगा, ओशन टू ओशन वेरी करेगा, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज 8.5% of the entire ocean bottom occupied by the continental slope. Okay, now what is the most significant relief feature is the canyon. In this region what you observe, canyon. Why? Because कैनियन अलग एक फुल टॉपिक है, वंस वो आ भी चुका है यूपीएससी में एज अ क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन कैनियन के ऊपर, ठीक है ना। अब कई कैनियंस हैं, एक दो के नाम बता सकते हो आप। ओशन के अंदर नहीं पता होगा या याद नहीं होगा, पता तो होता ही है, ठीक है। तो कुछ तो चीज़ें याद भी रखनी होती हैं अपने लिए, जरूरी नहीं है कि। उसके साथ साथ और क्या बोला, ट्रेंचेस ट्रांसवर्स टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो बोला कि दिस रीजन इज आइडेंटिफाइड, वेरी important characteristics feature you observe is the canyon, but basic concept about origin of canyon is the erosion by the turbidity currents। जो सेडिमेंट के साथ लैडिन करेंट्स है, वो करेंट्स इरोड कर कर सरफेसेस को वहाँ एक गड्ढा बनाती हैं, वो गड्ढा आई शेप्ड होता है, ठीक है ना, नैरो आई शेप्ड वैलीज बन जाते हैं, गहराई बढ़ जाती है ओशन की, उसे कैनियन। ओके, नाउ अभी इसके बारे में भी जो ओरिजिन है वो एक नहीं है, कुछ तो एग्रेडेशनल है, डिपोजिशनल बताते हैं, कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण कहते हैं, शमज हो गया, ओशन का सरफेस और नीचे चला गया तो गहराई बढ़ गई, ग्रेडियंट बढ़ गया और इसके कारण डेवलप हो, ठीक है। So there are multiple views regarding the origin, और ये मैंने फीचर्स डिस्कस किया था, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। अभी एक कॉन्सेप्ट है राइज, मैंने क्या कहा कि फ्रॉम द सेल्फ एंड द स्लोप रीजन द सेडिमेंट स्टार्टेड डिसेंडिंग डाउनवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड, एंड आफ्टर द स्लोप ब्रेक देयर इज अ कॉन्टिनेंटल राइज। अभी यहां पर भी वर्ड है कॉन्टिनेंटल राइज, एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट इट इज। नाउ so what is the transitional zone between the slope and the abyssal plane? the oceanic plane है और इसके बीच का ट्रांजिशनल जोन है, कॉन्टिनेंटल स्लोप एक साइड ओशियनिक प्लेन,
बॉटम ऑफ द सी और उसके बीच का जो ट्रांजिशनल जोन है दैट इज कॉन्टिनेंटल राइज। ओके, मैंने कहा क्या है, द प्रिज्म ऑफ थिकेंड सेडिमेंट, because sediment which is carried by the rivers first deposited in the shelf region, again the backwash जो waves retreat होती हैं तो it also carried the sediments backwards. The sediments moves down the slope, accumulate there, forms the prismatic triangular sedimentary structure. Prism का shape कैसा होता है? Triangular. Okay, thick sediments known as continental rise. Gradient very less, ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.5 to 1 डिग्री, स्लोप ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एंड तो बता दिया मैंने इसके बारे में, इट ऑक्यूपाइड ओनली 1.5% पार्ट ऑफ द ओशन। और फिर अबाइशल प्लेन, रिमेनिंग फ्लैट पार्ट्स। तो टुमारो आई विल डिस्कस द प्लेन एंड अदर टोपोग्राफिकल फीचर्स like shoals or the banks or sea mounts or trenches or the deeps or gjords or abyssal hills। तो ये फीचर्स मैं कल डिस्कस करूँ। ओके, तो हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।